Hello everyone. Good morning, good evening, good afternoon. Welcome to this wonderful platform of Rajmudra Academy. Today we are going to start a new chapter, that is sale. In sale, we are going to learn the discovery of sale theories, modern sale theory, and each and every cell organelle. Means each and every cell organelle means we are going to study nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria, ribosomes, and many more. Okay, so let's start with our new chapter, cell. This chapter carries 2 marks for Rajya Seva exam and 1 marks for combined exam. So focus on this chapter very well. Okay, before starting to the cell, let's see the diagram of cell. We will see a plant cell diagram to just visualize the cell organelles. कि प्लांट सेल कैसी दिखती है, कोई कौन सी भी सेल कैसी दिखती है, उसमें ऑर्गेनेलिज कौन कौन से होते हैं, ये देखने के लिए पहले तो हम देखेंगे कि ये सेल दिखती कैसी है डायग्रामेटिक, सो दैट अपना जो पढ़ाई है वो अच्छे से होने लगेगा. ठीक है, चलो लेट स्टार्ट. जस्ट अ मिनट. पहले तो हम देखेंगे कि ये सेल दिखती है. सेल सी, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी प्लांट सेल. ओके, सी outer membrane, inner membrane. Just read the cell organelles. These are cell organelles. मैंने पहले भी बताया था. हमारे होते हैं वो ऑर्गन्स होते हैं, हाथ है, पैर है, दिमाग है, कान है. ये क्या है, हमारे ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स. और सेल के जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज बोलते हैं. सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं. ठीक है, सो जस्ट रीड वंस. आई एम ऑल्सो गोना ड्रॉ वन डायग्राम. ओके, जस्ट सी वंस. या क्या क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अमाइलोप्लास्ट है, साइटोप्लाज्म. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ वन डायग्राम. आई एम ऑल्सो गोइंग टू ड्रॉ वन डायग्राम हियर. जस्ट मैं यहाँ पे डायग्राम क्यों ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि आपको इससे जान पहचान हो जाए. जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में जान पहचान होने के लिए मैं डायग्राम शो कर रहा हूं आपको. तो वॉच केयरफुली, बिकॉज ये सब हमें पढ़ना है, ये सब ऑर्गेनेलिज का हमें पढ़ाई करना है. तो जस्ट वॉच केयरफुली. आई एम गोइंग टू ड्रॉ वन डायग्राम. फर्स्ट आई विल ड्रॉ outer membrane. There is outer membrane, cell wall. This cell wall is for protection. As we have already studied that Monera's cell wall is made up of peptidoglycan, fungi cell wall is made up of chitin, plant cell walls are made up of cellulose. That we have already learned in biological classification. We are animals and we do not have any cell wall. Okay, cell wall is absent in animals. Cell wall is absent in animals. We do not need any cell wall. But other organisms on the earth have a cell wall. This is the outer membrane for the protection. This is the outer membrane for the protection, which is known as cell wall. सेल वॉल के बाद आता है सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. सी, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. This is the plasma membrane. Okay, okay. This is cell wall. This is cell wall. Okay. This is plasma membrane. This is plasma membrane or cell membrane. Plasma membrane. Okay. Okay. Now, see, here is a nucleus. Nucleus is porous. Okay. Nucleus is porous. So draw like this. Nucleus is porous and double membrane. So I am drawing double membrane. Nucleus is double membrane. Okay. Now, the outer membrane of nucleus extended into endoplasmic reticulum. So this is the endoplasmic reticulum. Okay. From this endoplasmic reticulum, few vesicles are break out and there become they becomes Golgi apparatus.
So this is nucleus. This is nucleus. This is endoplasmic reticulum. This is endoplasmic reticulum. This is Golgi body. So from this endoplasmic reticulum and this Golgi body, some special types of vesicles came out. They look like this. They are known as lysosomes. They are known as lysosomes. What? Lysosomes. These are lysosomes. Here somewhere there is mitochondria also present. Okay, mitochondria also present. Actually, this endoplasmic reticulum is connected with your cell membrane. But for the simplification, I draw it in straight line. Okay, I draw it in straight line. So this is the mitochondria. Here present mitochondria. Okay, like this, we have all the cell organelles, and there is cytoplasm. All cytoplasm occupies all the space in the cell. Okay, so these cell organelles, you can say they are swimming in cytoplasm. They are swimming in cytoplasm. You can say like this. Okay, this is the rough diagram of cell. This is a plant cell because it has a cell wall, outer cell wall, and we are animal. We do not have any cell wall. Clear? So we have to study all these cell organelles. We have to study all these cell organelles in this chapter. But before that, we have to learn the discovery of cell, how the cell gets discovered. Then we have to study different cell theories. There are cell theories, different cell theories that we have to study. And these cell theories are very important from our exam point of view. Clear, guys? Clear? Let's move to the discovery of cell. You can draw this diagram anyhow. Okay, chalo. So this is our cell. Okay, let's move to the discovery. Okay, cell, the unit of life. All organisms are composed of cell. Okay, some are composed of a single cell and are called unicellular organisms, while others composed of many cells are called as multicellular organisms that you know already. Some are unicellular. Moneras are unicellular. You know very well that. And from plants we are multicellular. Okay, that you know all very well. Okay, chalo. Let's move to the discovery of cell. ये तीनों के तीनों साइंटिस्ट पे फोकस करना, अच्छे से फोकस करना, ये तीनों के तीनों साइंटिस्ट पे अच्छे से फोकस करना. Discovery of cell is Robert Hooke, who actually discovered cell. Robert Hooke, who actually discovered cell. Okay, this is Robert Brown, who discovered nucleus. Who discovered nucleus? And this is Anton von Leeuwenhoek. This is Anton von Leeuwenhoek, who first observed living cell. Okay. Now there is time for the story. Time for the story. See, let me get a blank page. Just remember Robert Hooke. Focus on Robert Hooke. Focus on Robert Hooke. Focus on Robert Hooke. See, see, Robert Hooke. Okay. When he take the cross section of dead cork tree, he find there he find there is something like empty rooms. Empty rooms like this. I will show you like this. Like this. He saw some empty rooms when he take a cross section of cork tree. मधुमक्खियों के छत्ते जैसा उसको कुछ दिखाई दिया. उसने उसको नाम दिया सेल्यूलार. क्या नाम दिया? सेल्यूलार करके नाम दिया उसने. लैटिन में उसको सेल्यूला करके नाम दिया.
और इसी सेलुला से हमारा वर्ड बना सेल। इसी सेलुला शब्द से हमारा वर्ड बना सेल। मतलब एग्जाम में पूछा जाएगा कि रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवरी किया, ठीक है, लेकिन सेल के लिए उसने नाम क्या दिया था? सेलुला नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सेलुला नाम दिया था। और ये जो इसकी डिस्कवरी है, ये जो इसकी डिस्कवरी है, उसने लिखी अपने बुक में। उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। In 1665, he wrote the book Micrographia and he mentioned his discovery here. And he used name cellula for the cell because cellula means cellula. ये लैटिन शब्द है। इसका मीनिंग होता है प्रिजन रूम। प्रिजन रूम और एम्प्टी रूम। because these are dead cells, he did not find anything here. We just draw the diagram of cell. There are tremendous cell organelles, right? Like nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, right? But here he find nothing. He find empty rooms. He find prison rooms or empty rooms. That's why he gave name cellula, because cellula means prison room or empty rooms. He didn't find anything because these are dead cells. That's why he didn't find anything. Okay, didn't find anything. But remember this book name, Micrographia. Remember this book name, Micrographia. Here he mentioned his discovery. After some years, in 1673, one more scientist came. His name was Anton von Leeuwenhoek. Anton von Leeuwenhoek. His name was Anton was Leeuwenhoek. He first discovered the living cell. How? See, इसकी भी बहुत सारी एक स्टोरी है. Actually, Leeuwenhoek अपने अंकल के पास रहता था और उन अंकल की चश्मे की दुकान थी, तो बहुत सारे ग्लासेस वहां पड़ा रहते थे। वो बहुत ही नटखट था और वो सारे ग्लासेस एक दूसरे में मिक्स करते रहता था। वो मिक्सिंग करते करते इसी को ही पहला माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ है। माइक्रोस्कोप का जो डिस्कवरी है वो भी इसी ने किया है। और जब उसको माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ, वो खुशी से पागल हो गया और एवरीथिंग he was trying to find under microscope. उसने पानी लिया, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। उसने ब्लड लिया, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। जो भी चीजें मिलती थी वो उस माइक्रोस्कोप के नीचे देखता था। वैसे देखते देखते उसे कुछ हिलती हुई चीजें दिखाई दी। वो एक्चुअली सेल्स थे, लेकिन उन्होंने वो हिल रही थी, इसलिए इन 1673 उसने उसको नाम दिया एनिमलक्यूल। एनिमलक्यूल मीन्स एनिमल लाइक, एनिमल जैसा, एनिमलक्यूल। क्या नाम दिया उसने? एनिमलक्यूल। So that's why we say that Leeuwenhoek actually discovered living cell. So he discovered living cell. He discovered living cell. Okay, he discovered living cell. तो अगर जो क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा उसके हिसाब से आपका उत्तर चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा हु डिस्कवर्ड सेल, देन रॉबर्ट हुक, बट हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, देन लीवेनहॉक। बिकॉज लिविंग सेल की जो खोज है ये इसी ने की है, लीवेनहॉक ने की। ये ध्यान में रखना। ठीक है, हु डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट हुक, but who discovered living cell? Leeuwenhoek. And रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की, लेकिन उसको नाम क्या दिया? सेलुला। लीवेनहॉक ने लिविंग सेल की खोज की, लेकिन उसको नाम क्या दिया? एनिमलक्यूल। याद रखना, ये पेपर में पूछा जाता है। क्या नाम दिया उसको? एनिमलक्यूल नाम दिया। सेल नाम नहीं दिया उसने, एनिमलक्यूल नाम दिया था, क्योंकि वो एनिमल जैसा हिल रहा था ना, इसलिए उसको एनिमलक्यूल नाम दिया। तो डेड सेल
का डिस्कवरी किया रॉबर्ट हुक ने और लिविंग सेल का डिस्कवरी किया लिवेनहॉक ने। बट जनरल अगर आपको पूछा जाए कि हु डिस्कवर्ड सेल, देन रॉबर्ट हुक। ओके ओके, चलो हम अगेन वापस जाते हैं यहाँ पे। देखो, रॉबर्ट हुक ने ये डेड सेल का खोज किया। मधुमक्खी के छत्ते जैसा उसको एक स्ट्रक्चर मिला जिसको उसने नाम दिया सेल्यूला। अंदर कुछ भी नहीं था, इसलिए उसको लगा कि ये एम्प्टी रूम है, सेल्यूला। ओके, later on after so many years there is a scientist whose name is Robert Brown. He discovered that the he discovered that रॉबर्ट हुक तो बोल रहा था कि कुछ नहीं है अंदर, कुछ नहीं है अंदर, लेकिन उसको कुछ प्रॉमिसिंग अंदर लगा। उसको कुछ प्रॉमिसिंग अंदर लगा कि कुछ तो है। जो बहुत ही प्रॉमिसिंग है वो था न्यूक्लियस। वो क्या था? न्यूक्लियस था। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। तो दोनों रॉबर्ट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की है और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस, अंदर के न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है। अंदर के न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है। यह है डिस्कवरी ऑफ सेल। इसलिए बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि ये तीनों साइंटिस्ट को हमें ध्यान में रखना है। ही इज रॉबर्ट ब्राउन हु डिस्कवर्ड सेल इन माइक्रोग्राफिया बुक 1665। ओके, he is the Robert Brown who discovered nucleus in the cell. Okay, and he is the very famous Anton von Leeuwenhoek who actually discovered living cell. Okay, living cell. माइक्रोस्कोप की खोज भी इसने की है, लिवेनहॉक ने। He is very brilliant. Okay, he is very brilliant. He was very brilliant. Got it, guys? तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों साइंटिस्ट का नाम ध्यान में रखना है और तीनों ने क्या क्या किया है ये ध्यान में रखना है। बच्चों का क्या हो जाता है, ये दोनों रॉबर्ट में उनको कंफ्यूजन होता है। सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन टू रॉबर्ट्स। ही इज अ रॉबर्ट हुक एंड ही इज अ रॉबर्ट ब्राउन। डायग्रामेटिकली आपको ध्यान में रखना है ये सारी चीज। ओके, चलो नेक्स्ट। Now we will learn the cell theories. Cell theories. Okay, cell theories. The basic cell theories are, वो बहुत ही पुरानी थी, बहुत ही पुरानी थी। दोनों साइंटिस्ट है, वो दोनों साइंटिस्ट का आपको नाम ध्यान में रखना है। वो थे श्रीडेन एंड शॉन। श्रीडेन एंड शॉन। आगे होके देखो, ही इज अ मैथ्यू श्रीडेन, 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 श्रीडेन। ओके, एंड ही इज अ शॉन, थियोडोर शॉन। ये दोनों साइंटिस्ट के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ये है श्रीडेन और ये है शॉन। ओके, इन्होंने, ये बॉटनिस्ट थे। ये जो श्रीडेन है ये बॉटनिस्ट थे। इन्होंने प्लांट्स पे बहुत सारा काम किया है। और ये जो श्वान है ये जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने एनिमल्स पे बहुत सारा काम किया है, एनिमल सेल्स पे बहुत सारा काम किया है ये श्वान ने। ओके, और दोनों को नोबेल है। ठीक है, श्रीडेन एंड शॉन। इनका नाम बहुत डिफिकल्ट है टू प्रोनाउंस, बट यू हैव टू मग अप दिस, श्रीडेन एंड शॉन, श्रीडेन एंड शॉन। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट। I'm going to tell you what they actually mention. Okay, cell theories. Let's move to the cell theories. See, these are the cell theories. Sheridan and Shaw. Sheridan, as I said, he was the botanist. He was the botanist related to botany, and Sean was the zoologist. Sean was a zoologist. Now see. Now see. Sheridan. There are no There are nothing difficult here. There are nothing difficult here. See what Shrin has mentioned. What is his cell theory? See, very simple and basic. His cell theory, Shrin. All plants are made up of all plants are made up of cell. Okay, because he is botanist, he talk about plants. All plants are made up of cell. ज्या काही वनस्पती आहेत त्या सगळ्या सगळ्या पेशींनी बनलेल्या आहेत. ओके, and Sean said all animals are made up of
All animals are made up of cell. See, Sean was the zoologist, so he talk about animals. Okay, and these are the cell theories and very simple cell theories. You have to just remember that who is the botanist and who is the zoologist. Student put his cell theory in 1838 and Sean put forth his cell theory in 1839. Why I mention these years? Because there is a rumor that there is a story, there is a uh, small story about these two, that Shiren and Shons are टू क्लोज फ्रेंड्स. ये बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे अपने, एंड ये दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे. आप अपने बुक में देखेंगे कि ये दोनों का नाम एक साथ लिखा होता है कि हु प्रपोज सेल थ्योरी, शिरेन एंड शॉन. हमको लगता है एक ही बंदा है, ये एक ही बंदा नहीं है. शिरेन अलग है, शॉन अलग है, और दोनों ने काम भी अलग किया था थेरी सेल थेरीज पे. ठीक है, ये ध्यान में रखना. ओके, बुक में कुछ उल्टा सुल्टा लिखा होता है, देखो, इसलिए मैंने ये साल लिखा. इसने जो सेल थ्योरी दी है, प्लांट सेल थ्योरी दी है, प्लांट सेल थ्योरी किसने दी? शिडेन ने दी. ठीक है, ये 1838 में दी थी. और एनिमल सेल थ्योरी जो शॉन ने दी है वो 1839 में दी है. तो इन दोनों ने अलग अलग काम किया है, ये पहले ध्यान में रखना. ओके, और ऐसी एक कथा है कि ये दोनों फ्रेंड्स थे, और पहली सेल थ्योरी किन्होंने प्रपोज की थी? शिडेन ने प्रपोज की थी 1838 में. और ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों मिले थे एक दोस्त की शादी में मिले थे, और दोस्त की शादी में मिलते मिलते जॉन ने पूछा एक बार कि क्या चल रहा है. शिडेन को पूछा क्या चल रहा है, वो बोला कि मैंने ऐसी ऐसी थ्योरी अभी प्रपोज की है, ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल, कि जो ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, जो भी प्लांट्स है वो सेल से बने हैं. तो उसको भी दिमाग में आई, ये तो जूलॉजिस्ट था, उसको भी दिमाग में आई, लेट्स चेक अबाउट एनिमल्स. तो इन्होंने एनिमल पे खोज करना चालू कर दिया. तो उन्होंने भी ये पाया कि ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल. मीन्स लुक, 1838 तक हमें यह भी मालूम नहीं था कि हम सेल से बने हैं. हम सेल से बने हुए हैं, ये हमें पता चला 1838 एंड 1839. मतलब लेटेस्ट डिस्कवरी है, साइंस की लेटेस्ट डिस्कवरी है कि दैट वी आर मेड अप ऑफ सेल्स. ओके, तो ये पार्टी में मिले थे, इसने बोला मैंने ये डिस्कवरी की है कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल. तो ये इसने देखा, अच्छा ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, देन इसने एनिमल पे डिस्कवरी करना चालू कर दिया, और उसने भी ये पाया कि एनिमल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल. बट यहाँ एक ट्विस्ट है, कहानी में एक ट्विस्ट है यहाँ पे. देखो, हमने सेल की डायग्राम ड्रॉ की थी ना, हमने सेल की डायग्राम ड्रॉ की थी. यहाँ पे सेल वॉल है, और मैंने आपको बताया था वी आर एनिमल्स एंड वी डू नॉट हैव एनी सेल वॉल, राइट? वी डू नॉट हैव एनी सेल वॉल, बट सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट. But cell wall is present in plant. Okay, so so when so when so when Sean was working on animal cell, he didn't find anything, he find directly. जब अब देखो, आप इमेजिन करो, अगर शॉन एनिमल सेल का स्टडी कर रहा है, देखो माइक्रोस्कोप के अंदर वो एनिमल सेल का स्टडी कर रहा है, तो उसे मुझे बताओ सेल वॉल दिखेगी क्या? ये सेल वॉल जो है वो दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी. क्यों? बिकॉज वो एनिमल पे स्टडी कर रहा था, वो एनिमल पे स्टडी कर रहा था, एंड एनिमल डू नॉट पोजेस एनी सेल वॉल. तो जब शॉन ने देखा, एक ही कवरिंग दिख रहा था उसे. कौन सा कवरिंग दिख रहा था उसे? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग दिख रहा था उसे, शॉन को. उसको दिख ही नहीं रहता, दो कवरिंग नहीं दिख रहे थे उसे, एक ही कवरिंग दिख रहा था, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग था. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किसने की? शॉन ने की. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किसने की? शॉन ने की. उसको कुछ अलग लगा, अरे एनिमल सेल तो ऐसे है, एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, बट एनिमल की जब वो सेल की स्टडी कर रहा था, उसे ये सेल वॉल ही नहीं दिखा. उसको डायरेक्ट क्या दिखा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज किसने की? शॉन ने की. अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आया. अब ये जूलॉजिस्ट था, ये बॉटनिस्ट था, और इसका ये फ्रेंड था. उसने, शॉन ने चिड़ियन का भी प्लांट का स्टडी करना चालू कर दिया. कुछ जरूरत थी क्या? काही गरज नव्हती. मित्राच्या क्षेत्रामध्ये कशाला जायचं? त्याचं ते फील्ड आहे, कशाला जायचं तिकडं? स्वान ने इसकी भी खोज करना चालू कर दी, प्लांट की. और उसने पाया कि प्लांट में सेल वॉल है,
लेकिन एनिमल में सेल वॉल नहीं है। उसने क्या पाया कि प्लांट में सेल वॉल तो है लेकिन एनिमल में नहीं है। मतलब उसको दिखा कि एनिमल में तो सेल वॉल नहीं थी लेकिन प्लांट में मुझे दिख रही है। तो उसने एक अनादर थ्योरी उसने दी। वो थ्योरी थी उसकी प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। लुक, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल is the unique feature of plant cell। क्या थ्योरी मांडी उसने? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। मतलब प्लांट सेल में जो सेल वॉल हमें मिल रही है, प्लांट सेल में जो हमें सेल वॉल मिल रही है, वो उसका यूनिक फीचर है, यूनिक फीचर है। बिकॉज एनिमल में तो नहीं थी, एनिमल में तो नहीं थी सेल वॉल, सेल वॉल नहीं थी एनिमल में, सेल वॉल इज एब्सेंट। बट इन प्लांट सेल देयर इज अ सेल वॉल। And who discovered this? Sean only. So Sean put forth his another theory that presence of cell wall. What? Presence of cell wall is the unique feature of plant cell. ये था जूलॉजिस्ट, किसके बारे में बात कर रहा है? प्लांट सेल के बारे में बात। नोबेल तो इसी को मिलना था, ठीक है। इसलिए दोस्तों को भी अपने खोज के बारे में नहीं बताना चाहिए। देखो, इसने बता दिया, इसने पूरा कुंडली निकाल दिया, ओके, ठीक है। और इन दोनों के थेरीज को मिला के कहा जाता है सेल थेरी। अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में कि सेल थेरी किसने प्रपोज की, तो ये दोनों का नाम लिखेगा। सेल थेरी किसने प्रपोज की? श्रीन एंड शॉन। बट पर्टिकुलरली इफ दे आस्क who proposed plant cell theory, then Schreden. If they ask who proposed animal cell theory, then Schwann. Okay, but collectively if they ask who proposed the cell theory, then इन दोनों का नाम आपको लिखना है। Okay, got it guys? This is basic cell theory, but there is advanced cell theory also. There is advanced cell theory also. So let's look at this advanced cell theory. Headline: modern cell theory. Make a headline: modern cell theory. Modern cell theory. Who gave us modern cell theory? Rudolf Virchow. Who gave us modern cell theory? Rudolf Virchow. Just write down the heading. Just write down the heading. Modern cell theory. Who gave? Rudolf Virchow. Who gave us modern cell theory? Rudolf Virchow. Okay. Who gave us modern cell theory? Rudolf Virchow. He proposed modern cell theory. What he said, that is very interesting. He said it in Latin words. What his cell theory was? Read. Read what he said. Omnis cellula e cellula. What he said in Latin. This is in Latin. Omnis cellula e cellula. ये हमें नींद में भी याद आना चाहिए। Omnis cellula e cellula. Omnis cellula e cellula. It means in simple words, it means all cells arises from pre-existing cells. Omnicellula cellula means all cells arises from pre-existing cell. जो भी नए सेल बन रहे हैं वो उसके प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रहे हैं। मतलब अगर ये मेरे पास सेल है, इसके दो सेल बन गए, इसके और दो सेल बन गए, तो ये जो नया बनने वाला जो सेल है, ये जो नया बनने वाला सेल है, वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से तैयार हो रहा है। ये अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से तैयार हो रहा है। ये है मॉडर्न सेल थ्योरी जो बनाई थी रुडोल्फ वर्चो ने। ही सेड ओमनिस सेलुला ए सेलुला। व्हाट ही सेड? ओमनिस सेलुला ए सेलुला। दैट मींस ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी नए सेल बन रहे हैं, जो भी नए सेल बन रहे हैं, वो अपने पुराने सेल से बन रहे हैं। ओके, अब आपको ये
जानने में दिलचस्पी होगी, ठीक है। तो ये सेल किससे बनी, ये इसके प्री एग्जिस्टिंग से बनी, है ना। ये किससे बनी, ये इससे प्री एग्जिस्टिंग से बनी। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, जो एक्चुअल स्टार्ट कहाँ से हुआ था, जो स्टार्ट हुआ था उसकी डिस्कवरी अभी चालू है। और कुछ ऐसी भी थेरीज आ रही है, कुछ ऐसे भी प्रबंध आ रहे हैं कि इस लिविंग की जो स्टार्टिंग है प्री एग्जिस्टिंग स्टेज से वाज नॉन लिविंग, तो वी आर ऑल मेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसी एक थ्योरी आ रही है, लेकिन अभी उसको वैसे में वैलिडेशन मिला नहीं है, ठीक है। So, but this is the modern cell theory which was put forth by Rudolf Virchow. He said omnicellular cellular. This sentence is very famous and frequently asked in exam, so make it IMP. It's very important. They will ask you who said omnicellular is cellular. They will ask you who said omnicellular is cellular. So you must have remembered Rudolf Virchow. Or they will ask you who put forth modern cell theory. Who put forth modern cell theory? Rudolf Virchow. Or they will ask you what is the meaning of omnicellular is cellular. What they will ask you? They will ask you they will ask you what is the meaning of omnicellular cellular. Then you have to say omnicellular cellular means all cells arises from pre-existing cells. Okay, all cells arises from pre-existing cells, that you have to mention. Okay, so this is the modern cell theory. What we have learned today, we have learned cell discovery. First we have checked diagrammatically the cell. Okay, what are the cell components, outer coverings, and cell organelles. Then we check cell discoveries. In cell discoveries, we came across three major scientists, main scientists: Robert Hooke, Robert Brown, and Anton von Leeuwenhoek. Then we studied classical cell theory. Classical cell theory means who given by Schiden and Schwann. Schiden said all plants are made up of cells, and Schwann said all animals are made up of cells. Presence of cell wall is the unique feature of plant cell, right? Then we studied modern cell theory. This modern cell theory, which was given by Rudolf Virchow, he said omnicellular cellular means all cells arises from pre-existing cells. Is this interesting? Okay, revise it wisely. This is a very interesting topic, and I hope you are getting more and more and more confidence. Okay, don't forget to prepare vocabulary. Vocabulary is an important part of our study, science. Okay, let's revise. What I have done so far? First, which First, we learn the names. Okay. Now you can understand very well. This is cell wall, outer covering for protection. For protection. This is cell membrane. सेल मेम्ब्रेन का और एक नाम है, क्या नाम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये पहली बार किसने देखा था बच्चों? माय डियर चिल्ड्रन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहली बार किसने देखा था? श्वान ने देखा था, राइट? याद रखना. वैक्यूअल, ये वैक्यूअल क्या है? ये प्लांट सेल में काफी ज्यादा पाया जाता है. वैक्यूअल मतलब वो उसमें कुछ नहीं होता, जस्ट क्या होता है, डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे हमारा रिसाइकल बिन होता है, जैसे वैसा ये होता है वैक्यूअल. उसमें कुछ नहीं होते, कुछ आयन स्टोर होते, एक्सेट्रा. ओके. न्यूक्लियस, मास्टर ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, मास्टर ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस. ओके. न्यूक्लियोलस, दिस इज न्यूक्लियोलस. ओके. दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है. देन क्लोरोप्लास्ट, विद द हेल्प ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड so that they are autotrophic. Okay. Then mitochondria, this mitochondria is known as powerhouse of cell. They generates ATP, they generates energy, that's why they are called as powerhouse of cell. They are powerhouse of cell. Then there is a Golgi body. Golgi apparatus भी कहा जाता है इसे. These are ribosomes. राइबोसोम्स को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री. ये प्रोटीन बनाने में बहुत काम आते हैं राइबोसोम्स. प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं उसे, ठीक है. राइबो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये दोनों पार्ट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों पार्ट होते हैं उसके, ठीक है. देन देयर इज अ इंपॉर्टेंट साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म, देयर इज अ सेमी फ्लूइड दैट इज
cytoplasm. So this much of study we have to do in next part. From next lecture, we are going to check cell wall. We will study cell wall and plasma membrane in our next lecture. Okay, till then, take care, bye bye, and see you soon. Thank you very much. Thank you very much.